चिंता चिंतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः त्वय्यानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्य चरण के प्राकट्योत्सव के उपलक्ष्य में वल्लभ वाङ्मय का अवगाहन विगत कुछ दिनों से आरंभ हुआ है। उसके अंतर्गत रात्रि सत्र में ब्रह्मसूत्रानुभाष्य का अवगाहन कर रहे हैं। 3 अधिकरणों का अवगाहन अभी तक संपन्न हुआ, 4 का। अब आगे का क्रम आज से आरंभ करना है। जिनका क्रम हो वो हाथ ऊंचा करें और आरंभ करें। जी जय जी, दंडवत प्रणाम जय जी। प्रणाम जय जी। मेरा क्रम है जय जी। वल्लभ कुल परिवार को मेरा दंडवत प्रणाम। महाप्रभु जी गोसाई जी, गोपीनाथ जी ने मारा दंडवत प्रणाम। वल्लभ कुल परिवार ने मारा दंडवत प्रणाम। શરૂ કરું છું જે मेरा 5वां अधिकरण है आनंदमयाधिकरण। अणुभाष्य जो महर्षि वेद व्यास जी रचित ब्रह्मसूत्र है उसके ऊपर श्री महाप्रभु जी ने भाष्य किया है। उसका प्रथम सूत्र हम देखें तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा कि ब्रह्म के विषय में विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा संशय उपस्थित करने पर फिर महाप्रभु जी उसमें आज्ञा करते हैं कि वेद का प्रामाण्य तो स्वतः सिद्ध है, इसीलिए ब्रह्म ही जिज्ञास्य विषय है, ऐसा प्रथम सूत्र में कहा। दूसरे अधिकरण में जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनित्वात्, उसमें ब्रह्म को जानने के अर्थ में 2 अंश में निरूपण किया गया है, जिसमें ब्रह्म का जो स्वरूप लक्षण है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वह ब्रह्म कैसा है और उसमें प्रमाण क्या है, ऐसा पूछ रहे हैं। संशय उपस्थित होने पर उसका स्वरूप लक्षण सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म और उसका कार्य लक्षण यतोवा इमानी भूतानि जायन्ते, वो अर्थ के अनुसार और शास्त्र योनित्वाद से वेद की ही प्रमाण रूपता सिद्ध करते हैं और ब्रह्म ही जगत की उत्पत्ति स्थिति लय करता है, उसमें कोई संशय नहीं है। ये बात यहाँ जन्माद्यस्य अधिकरण से बता रहे हैं। ब्रह्म को जगत का कारण कहा तीसरे अधिकरण में, तो उसमें शंका करी कि ब्रह्म किस प्रकार के कारण रूपता ब्रह्म की हमें स्वीकारनी चाहिए। तो उसमें सिद्धांत बताया कि ब्रह्म केवल जगत का निमित्त कारण केवल करता ही नहीं है, अपितु संवाही कारण भी ब्रह्म ही है। जगत का अस्तित्व ब्रह्म में से है इतना ही नहीं, परंतु जगत है वह ब्रह्ममय है। यहाँ ब्रह्म का सदंश का कार्य तीसरे अधिकरण में बता रहे हैं कि ब्रह्म जो सदंश है वो कार्य भी ब्रह्म का ही है। चौथे इक्षत्य अधिकरण में भगवान ने जो एकोहम बहुश्याम प्रजाएय जो ईक्षण भगवान का बताया, तो ईक्षण जो है वो ईक्षण भी जड़ नहीं कर सकता ईक्षण, इसीलिए चेतन का ईक्षण चेतन ही ईक्षण कर सकता है, इस तरह से निरूपण किया। और जो श्रुति वचन में आत्मा पद है उसको कोई जीव परक न समझ ले, इसलिए उसका भी व्यावर्तन करके ये जो ईक्षण है वह भी ब्रह्म ने ही किया है। ऐसे जैसे सदरूप का कारण ब्रह्म है, उसी तरह से चिद रूप का कारण भी ब्रह्म ही है, ऐसा बताए चौथे अधिकरण में। अब 5वां अधिकरण कर रही हूँ।
ब्रह्म सत चित आनंद रूप होने से यह तीन गुणों से प्रकृत ब्रह्म ही जगत का कारण है, ऐसा नहीं कह सकते। तो अगर ऐसा हम नहीं कह सकते तो इस लक्षण में अव्याप्ति का दोष आता है। और जैसे सत और चित का कारण भी ब्रह्म है, वैसे इस अधिकरण में आनंद रूप भी ब्रह्म ही कारण, ब्रह्म ही है, ऐसा बताने के लिए आनंदमय अधिकरण यहाँ आ रहा है। वेदांत अधिकरण माला में पुरुषोत्तम जी आनंद का लक्षण कहने पर जो अव्याप्ति दोष आता है उसको परिहार कर रहे हैं, जो यहाँ हमने देखा। और प्रथम सूत्र में जो आनंदमयोभ्यासात ये सूत्र है, तो उसमें कह रहे हैं कि पुनः कथन रूप जो अभ्यास है वो अभ्यास से आनंदमय जो है उसके ब्रह्मत्व का स्थापन इस अधिकरण से कर रहे हैं, ऐसी बात यहाँ पुरुषोत्तम जी भी कह रहे हैं। इसके बाद अब अधिकरण में देखें तो 8 सूत्र वाला ये अधिकरण है। 8 संख्या की संगति यहाँ बता रहे हैं कि मन सहित जो 5 ज्ञान इंद्रिय है उनको मिला के 6 जो इंद्रिय द्वारा आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद का उपभोग इंद्रिया करती है, इसलिए ये 6 बताया। और 2 आनंद के प्रकार में ब्रह्म का आनंद और जीव का आनंद, ऐसे 8 भेद से 8 सूत्रों का यह अधिकरण बताया। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात, आनंद कहने से ब्रह्म को ही जानना चाहिए। तैतरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए तस्माद्वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूत, वह आत्मा ही जो परम ब्रह्म परमेश्वर है उसी से आकाश आदि की सृष्टि बताई। उसमें अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय इन 5 कोश से वर्णन किया है। वहाँ क्रमशः अन्नमय का प्राणमय को, प्राणमय का मनोमय को, मनोमय का विज्ञानमय को और विज्ञानमय का आनंदमय को अंतरात्मा बताया गया है, परंतु आनंदमय का अंतरात्मा बताया नहीं है और आनंदमय से ही जगत की उत्पत्ति आदि होती है, ऐसा वहाँ निरूपण किया है। इससे समझ में आता है कि ब्रह्म के जो ये 4 रूप है, अन्नमय आदि, जो अन्नमय, प्राण, मन, विज्ञानमय, वो विभूति रूप है और आनंदमय ही ब्रह्म का साक्षात स्वरूप है, ये बात समझ में आती है। आनंद की मात्रा की गिनती करते करते मानुष आनंद से लेकर अक्षर पर्यंत के आनंद की गणना कर सकते हैं, परंतु अगणित आनंद तो केवल ब्रह्म में ही है, इसीलिए आनंद पद से ब्रह्म ही वाच्य बनते हैं। आनंद जो है वह ब्रह्म का असाधारण लक्षण है, ये बात हम समझ सकते हैं। रसो वै सह रसम येवाय लब्ध्वा आनंदी भवति, को हेवान्यात् कह प्राण्यात् यदेश आकाश आनंद न स्यात् एष एवाय आनंदयाति। तो उसका अर्थ कर रहे कि वह आनंदमय ही रस स्वरूप है। वह जीवात्मा इस रस स्वरूप परमात्मा को पाकर आनंद युक्त हो जाता है। यदि वह आकाश की भांति परिपूर्ण आनंद स्वरूप परमात्मा नहीं होता तो कौन जीवित रह सकता, कौन प्राणों की क्रिया कर सकता। सचमुच वह परमात्मा ही सबको आनंद प्रदान करता है। इस तरह से देखे तो ब्रह्म की ही आनंदमय रूपता की सिद्धि शास्त्र करता है। अब अधिकरण देखे तो विषय वाक्य, तैतरीय उपनिषद में ब्रह्म और भृगु प्रपाठक में आनंदमय शब्द से आनंद प्रतिपादक वाक्यों की ब्रह्म परकता बताते हैं। संशय कर रहे हैं उसमें कि आनंदमय नाम से किसका वर्णन हुआ है, परमेश्वर का, जीवात्मा का या फिर अन्य किसी का। तैतरीय प्रपाठक अब्रह्म परक है, ऐसा संदेह भी यहाँ क्यों हुआ, और आनंदमय शब्द का जो प्रयोग किया गया है या फिर आनंदमय के स्थान पर अन्नमय आदि शब्द भी कहे तो उसकी असंगति कैसे है। ऐसा प्रश्न करने पर ब्रह्मविद आपनोति परम, यह श्रुति वचन से ब्रह्म को जानने वाला पर को प्राप्त करता है। यहाँ आनंदविद न कहकर ब्रह्मविद कहा, उसमें ज्ञेय अंश के रूप में आनंद को नहीं बताया, परंतु जड़त्व का निराकरण करने के लिए सर्वज्ञ जो ब्रह्मविद है वह आनंद स्वरूप है, ऐसा बताने के लिए ही यह प्रपाठक की प्रवृत्ति बताई है। इस प्रपाठक में अन्नमय आदि की जो उपासना बताई है और ऐसी उपासना से आनंदमय फल प्राप्त होगा ऐसा कहा है, परंतु जो लोग अन्नमय आदि का अर्थ भौतिक पदार्थ ऐसा करते हैं तो उनको प्रपाठक की असंगति ही प्रतीत होती है, क्योंकि वो भौतिक नहीं है।
सब कुछ ब्रह्मात्मक है। और इस प्रपाठक का आशय भी आनंद के अंश रूप ही है और ब्रह्म ही उनका कारण है, ऐसा मानने से ही प्रपाठक का तत्व हमें समझ में आता है। इस प्रसंग में कारणता का प्रतिपादक तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः इत्यादि वाक्य में आत्मा के पद प्रयोग से आनंद की समीपता और फल रूप से चिदंश की कारणता बताकर आनंद स्वरूप ब्रह्म की अंतर्यामिता का प्रतिपादन किया गया है और अंत में वह अंतर्यामी रूप आनंद स्वरूप से मिलकर आनंद की उच्चतम मात्रा को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से अन्नादि की ब्रह्म रूप से उपासना बतलाई गई है, उसमें भी क्रमशः प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और अंत में आनंदमय फल को प्राप्त करता है। अब पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं कि अन्नमयादि की उपासना बताई, उसमें अन्नमय कहने से अन्न का प्राचुर्य अर्थ करे तो वह निरर्थक हो जाता है और उससे फल सिद्धि नहीं होती। उसी तरह से आनंदमय का अर्थ भी ब्रह्म परक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसकी भी फल सिद्धि नहीं होती। ऐसा पूर्व पक्षी शंका करने पर महाप्रभु जी अब सूत्र ला रहे कि आनंदमयोभ्यासात् उत्तर दे रहे। अभ्यास का अर्थ कर रहे हैं कि पुनः पुनः उल्लेख करना। यहाँ जो अभ्यास कहा गया है वह एक रूपता बताने के लिए नहीं कहा गया है। जैसे पूर्व मीमांसा में कहा कि तनुनपातम यजति, समिधो यजति, ईडो यजति, बहिर्यजति, आदि में यजति तो सब में आ रहा है, उसका बारंबार पुनः पुनः उसका उल्लेख हो रहा है, तो वो तो एक क्रिया है और परंतु पदार्थ में तो भेद रहता ही है। उसी तरह से अन्नम, प्राणम, विज्ञानम, आकाशम आदि सबकी भी आनंद रूपता बताई, परंतु उसमें भी हम देखें तो आनंद की मात्रा सब में भिन्न भिन्न ही है। वह तो महाप्रभु जी कहते हैं कि हमने भी यह तो माना ही है। मयट पद प्राचुर्यार्थ प्रयोग किया गया है। मयट का अर्थ जिस शब्द के साथ मयट जुड़ जाता है वैसे ही उसकी प्रकृति के अनुरूप अर्थ करता है। पुनः पुनः आनंद शब्द के उल्लेख से तथा तस्य प्रियमेव शिरः, मोदः दक्षिण पक्षः, प्रमोदः उत्तर पक्ष, उसमें जो प्रियता, मोद, प्रमोद आदि आनंद के विशेषण मात्र है, इससे सिद्ध किया कि आनंदमय जो है वो ब्रह्म ही है। अब श्रुति वचन से सिद्ध करते हैं कि स वै नैव रेमे तस्मात् एकाकी न रमते स्वद्वितीयम् ऐच्छत् स हेतावाना। ब्रह्म ने यह जगत क्रीडार्थ उत्पन्न किया है, ब्रह्म ने द्वितीय की इच्छा की। यह जो ईक्षण है वह भी अपूर्णता का द्योतक नहीं है, वह पूर्ण ही है। एष उ एव साधु कर्म कारयति, एष उ एव असाधु कर्म कारयति। इस श्रुति वचन में ब्रह्म ही जीवों को अच्छे बुरे कर्मों को करवाते हैं और अच्छे बुरे कर्मों का भोग भी ब्रह्म ही करवाते हैं। यह तो ब्रह्म का आत्मरमण ही है, स्वयं की स्वयं के साथ क्रीड़ा ही है। और ऐसा ही कर्म ज्ञान कांडों का भी, दोनों कांडों का भी यही प्रतिपादन है। अगर हम ब्रह्म की सर्वरूपता नहीं मानेंगे तो जीव के साधन फल का निरूपण करने वाली जो श्रुतियां है वो जीव परक हो जाएगी, ब्रह्म परक नहीं होगी। पूर्व कांड में जो कर्म करने से स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति होती या फिर और कोई भी पूर्व कांड के यज्ञ आदि करने से कोई भी फल प्राप्त होता है, वह इस अखंड आनंद की मात्रा ही है और निर्वधि आनंद जो है वही परम फल है। यही श्रुति का तात्पर्य है। तैतरीय उपनिषद ने बताया ब्रह्मविद आपनोति परम। इस श्रुति वचन में साधन सहित फल का निरूपण किया। अक्षर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। उसमें पर ब्रह्म का लक्षण बताते हुए कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन स अस्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपस्थिता। तैतरीय उपनिषद का वचन है कि ब्रह्म के जो सत और चिद अंश है वह भी अपरिच्छिन्न है, यह बताने का हेतु है और आनंद का निरूपण कर रहे हैं आगे। इसमें शंकराचार्य जी जो शंका कर रहे हैं कि पर प्राप्ति को, शंकराचार्य जी जो है वो पर की प्राप्ति यहाँ ब्रह्म विदाप्नोति परम, उसमें परम पद से वो ज्ञानात्मिका मानते हैं कि वो ज्ञान ही प्राप्त होता है जीव को। ब्रह्मविद आपनोति परम, इस श्रुति वचनकार शंकराचार्य जी ब्रह्म प्राप्त व्यक्ति को ब्रह्म प्राप्त करता है, ऐसा अर्थ करने पर
साधन और फल में भेद नहीं रह जाएगा, यह बात यहाँ कह रहे कि साधन और फल में भेद नहीं रहेगा। और जीवो ब्रह्मैव ना परः, जीव और ब्रह्म का ऐक्य बताते हैं। तो कहते हैं कि जीव जब ब्रह्मविद हो जाएगा तो पर को प्राप्त करेगा, ऐसा तो कह नहीं सकते क्योंकि जीव और ब्रह्म का तो ऐक्य है, भिन्न नहीं है। तो उसमें महाप्रभु जी सिद्धांत बताते हुए कहते हैं कि आनंद इज इक्वल टू परम फल। सत्यम, विज्ञान और आनंद जो रूप बताए वह सच्चिदानंद विग्रह ही है। ऐसे ही श्रुति सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य ज्ञान और उसके साथ अनंत पद है, वह अनंत पद से आनंदवाची ही समझना चाहिए। इसलिए आनंद ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। यो वेद, जो जानता है, ऐसा ही कहा है। आनंद इससे स्पष्ट नहीं कह के यो वेद, जो आनंद को जानता है, ऐसे ही यहाँ उल्लेख किया है। तो हाँ, अब आगे कहते कि और एक श्रुति वचन महाप्रभु जी दे रहे हैं कि नायमात्मा प्रवचनेन न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यः। यह आत्मा प्रवचन से, मेधा से, स्वाध्याय से लभ्य नहीं है, परंतु जिसे यह वर्ण करता है उसी से लभ्य है। आनंदमय को किसी भी साधन से प्राप्त नहीं किया जाता, वह तो केवल कृपैक लभ्य है अथवा वर्णिक लभ्य है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि ब्रह्मविद आपनोति परम, ऐसा बता दिया, और नायम आत्मा प्रवचनेन से वर्ण लभ्य बताया। तो इन दोनों श्रुतियों में विरोध आ रहा है। तो उसका समन्वय करके अर्थ का निर्णय करते हैं कि अक्षर ब्रह्म के ज्ञान से अविद्या का निवारण होने पर जीव प्राकृत धर्म रहित होता है, और चित्त शुद्ध होने पर परमात्मा जीव का आत्मीय रूप से वर्ण करते हैं, जिससे जीव में भक्ति होती है, और इससे स्वरूप योग्यता प्राप्त जीव में पुरुषोत्तम प्राप्ति की योग्यता आती है। अब परमे व्योमन जो कहा, जो ब्रह्म का लक्षण बताते हुए उसका कर रहे हैं कि जो जीव का भगवान अंगीकार करते हैं वह जीव में भक्ति का भाव प्रकट होता है, तब अंतःकरण की गुहा में परम आकाश का आविर्भाव होता है। परोमीयते दृश्यते अनेन इति परमम, ऐसी व्युत्पत्ति से ज्ञान मार्गीय जीव को ज्ञेय अक्षर ब्रह्म रूप भगवत साक्षात्कार होता है। उससे यहाँ विशेषता होने से व्योम है, वह भी परम तत्व ही है। परम व्योम कहा वह भूताकाश नहीं है अपितु चिदाकाश है। यहाँ परम व्योम जो है उसकी अति अलौकिकता बताने के लिए ही परम ऐसा अलौकिक प्रयोग किया है। नाहम वेदे न तपसा भक्त्या तु अनन्या शक्य, इस वचन में मैं केवल भक्ति से ग्राह्य हूँ, वेदों से नहीं। आदि स्मृति वचन से ज्ञान मार्गीय को अक्षर प्राप्ति और भक्ति से ही पुरुषोत्तम प्राप्ति बताई है। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, हे महामुने, करोड़ों मुक्त और सिद्ध पुरुषों में भी नारायण परायण और शांत अंतःकरण वाला पुरुष मिलना कठिन है। तो मेरी भक्ति करने वाला मेरे में जिसका चित्त है, ऐसे योगी को ज्ञान वैराग्य वास्तव में कल्याणकारक नहीं है। इस वचन से भी सिद्ध हो जाता है कि भक्ति से ही मैं प्राप्त हूँ, और भक्ति की उत्तमता भी यहाँ बता रहे हैं। हृदय गुहा में प्रकट हुआ जो परम व्योम अक्षर पुरुषोत्तम का गृह रूप होने से उसमें विराजे हुए पुरुषोत्तम के स्वरूप को जो भक्त जानते हैं, वह नित्य अविकृत विपश्चित ब्रह्म के साथ सर्व कामों का भोग करते हैं। भगवान ने जिस जीव को अंगीकार किया है वह भक्त शुद्ध पुष्टि मार्गीय होने से वह जो भोग करता है उसमें उसकी स्वतंत्रता होती है। मतलब वहाँ भगवान जो है, ब्रह्म जो है, उसकी गौणता बता रहे हैं, क्योंकि भक्त की ही स्वतंत्र भोग रूपता यहाँ बता रहे हैं। जिसे गीता जी में अहम भक्त पराधीन, जो भक्ति से मुझे वश करता है, इन वचन से भी कहते हैं। यहाँ पर अब सह अश्नुते सर्वान कामान ब्रह्मणा विपश्चिता, इसका अर्थ कर रहे हैं कि जो यहाँ पूर्व पक्ष बता रहे, शंकराचार्य जी कह रहे कि अश धातु का व्याप्ति का अर्थ ले तो अश्नुते, और उससे ब्रह्म जिस आनंद का अनुभव करता है वैसे जीव भी ऐसा ही आनंद का अनुभव करता है।
तो महाप्रभु जी उसमें कहते हैं कि जीव में हम व्यापकता का धर्म स्वीकार नहीं करते हैं। जीव ब्रह्म के ऊपर व्याप्त नहीं हो सकता क्योंकि ब्रह्म महान है। जीव में जो आनंद गुणधर्म आता है वह तो आगंतुक है, स्वाभाविक नहीं है। जैसे उदाहरण से वामदेव जी ले तो वामदेव जी में भी जो धर्म आए व्यापकता के, तो वह ब्रह्म के धर्म है, जीवगत धर्म नहीं है। यदि ऐसा कहे कि ब्रह्म के साथ भौतिक कामनाओं का भोग करता है, तो यहाँ कहते हैं कि आपनोति परम में तो परम कहने से ब्रह्म का अखंड आनंद ही समझना चाहिए। इसलिए जो ब्रह्म के साथ जो भोग करता है वह भौतिक या लौकिक भोग नहीं है, परंतु अलौकिक कामनाओं का भोग ही जीव करता है, ऐसा ही हमें समझना चाहिए। पूर्व पक्ष अब कह रहे हैं कि सकाम उपासक जीव और उसका उपास्य सगुण ब्रह्म, तो वो सकाम उपासक जीव है, सगुण ब्रह्म के साथ वो कामोपभोग करता है, दो की तरह होकर एक दूसरे को देखता है, ऐसा उपक्रम करके वर्णन किया गया है। और जहाँ द्वैत देखता है तो भोग पॉसिबल बनता है, ये बात यहाँ शंकराचार्य जी कह रहे। परंतु जहाँ सब कुछ आत्मा ही था, कौन किसे देखे, यहाँ पर द्वैत दर्शन नहीं होता। तो यहाँ तो निर्गुण ब्रह्म का वर्णन है। निर्गुण ब्रह्म जो है वो कामनाओं का उपभोग नहीं कर सकता, ये पूर्व पक्षी कह रहे। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। ऋग्वेदीय श्रुति तदेशाभ्युक्ता पूर्व श्रुति को देखे तो ब्रह्म में प्राकृत गुण संबंध हो नहीं सकता, और ऐसा कहेंगे तो ब्रह्मवेत्ता के लिए पर तत्व की प्राप्ति असंभव हो जाएगी। उपास्य उपासक की प्रक्रिया में जो सगुण ब्रह्म की बात कही वह भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो साध्य तत्व है वह तो निर्गुण ही है, और जीवात्मा की अवस्था के अनुसार ब्रह्म में सगुणता या निर्गुणता का आवेश आता है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। भागवत जी के वचन यहाँ दे रहे कि मुनिजन गुण रहित स्थिति में समाहित चित्त होकर पर तत्व को देखते हैं। निर्गुण अवस्था में जीव भगवान के लोक का दर्शन करता है, साक्षात भगवान का दर्शन जीव की सगुण अवस्था में हो नहीं सकता। और आगे शंकराचार्य जी ने जो हमें कहा कि जीव और ब्रह्म के बीच में द्वैत हो तो ही भोग पॉसिबल बनता है, तो उसमें महाप्रभु जी कहते हैं कि ऐसा मानने का भी कोई कारण नहीं है। अद्वैत की अनुभूति करने वाला जीव भी भगवान के साथ रहकर सुख का भोग कर सकता है। जीव को जब ब्रह्म का अनुभव होता है तब प्रापंचिक जगत में ब्रह्मात्मक अनुभूति उसकी हो जाती है, तो अद्वैत का अनुभव हो जाता है उसको, और अद्वैत का भान होने पर ब्रह्मविद को प्रापंचिक भेद का दर्शन नहीं होता और ब्रह्मात्मक ही दर्शन होता है। इसके लिए छांदोग्य उपनिषद का वचन कह रहे कि यत्र न अन्यत पश्यति, जहाँ दूसरा कुछ भी नहीं देखता है, इससे भूमा का स्वरूप बताया, और यह सर्व आत्मा ही है। तब तक उसके विभाव का वर्णन करते हुए वह उस प्रकार देखकर, उस प्रकार जानकर, उस प्रकार मानकर आत्मरति, आत्मक्रीड और आत्ममिथुन और आत्मानंद ऐसा जो जीव है वो विराट हो जाता है और समस्त लोकों में उसकी अप्रतिहत गति हो जाती है। तो ऐसी गति जीव की भी बताई। अब आगे कह रहे कि तदेशाभ्युक्ता, यह ब्रह्म निरूपिका ऋचा है। आनंद का फलात्मक रूप से साध्य स्वरूप ब्रह्म में विनियोग नहीं किया है, परंतु ऋचा ब्रह्मविद वाक्य का ही विवरण करती है, और भगवत प्राप्ति के लिए वर्ण से भक्ति लाभ होने से हृदय गुहा में परम व्योम आविर्भूत होते हैं, और उसमें निहित पुरुषोत्तम ही है और वही परम फल है। ब्रह्म परम फल अखंड आनंदात्मक हृदय गुहा में रहने वाला अंतरंग से भी अंतरंग है, वही सब कुछ बना है। आदि दैविक है, आदि भौतिक आदि रूपों को भी ब्रह्म ने ही आविर्भूत किया है। जिस अधिष्ठान में ब्रह्म की अनुभूति होती है वह हृदय आकाश भी ब्रह्म के अतिरिक्त कोई तत्व नहीं है। वह आकाश को अधिष्ठान बनाकर ब्रह्म की अनुभूति करवाने के लिए ही वह आकाश रूप बनता है। अब जो चार कोश है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, उनमें चार कोश की ब्रह्मात्मकता को कैसे समझे, तो कहते हैं कि जैसे अन्नमय से अंतरंग प्राणमय, फिर मनोमय और फिर विज्ञानमय है। जो आत्मा के निकट अंतरंग है,
सबसे बाह्य स्वरूप जो जल स्वरूप है वो अन्न रसमय, वायु रूप प्राणमय, तेज रूप मनोमय, आकाश रूप विज्ञानमय, ऐसे उत्तर उत्तर वो अंतरंग होते जाते हैं। मयट का अर्थ प्राचुर्यार्थ और विकारार्थ भी हो सकता है। ऐसे मयट शब्द का दोनों अर्थ हो सकते हैं, परंतु अगर जो हम विकार अर्थ ले उसका मय का, मयट प्रत्यय का, तो अन्नमयादि प्राकृत हो जाएंगे। और इसीलिए यहाँ महाप्रभु जी कहते हैं कि मयट पद का अर्थ आनंद ही यहाँ लेना उचित है। चारों को लिया है, मतलब आनंद ही अर्थ उसका लिया है। अभी महाप्रभु जी पूर्व पक्ष को प्रस्तुत यहाँ करके बता रहे हैं कि इन चारों को प्राकृत माने तो उसमें जो जीवात्मा रहती है वह अविद्या से मुक्त आनंदमय होती है, बाकी चार तो प्राकृत हो जाते हैं। ऐसा अगर पूर्व पक्ष का कोई मतलब ऐसा कोई कहे, शंका करे, तो उसका निराकरण महाप्रभु जी कहते हैं कि श्रुति यह निरूपण करती है कि जो भी अन्नमयादि चार है वह अब्रह्मात्मक नहीं होते और मयट प्रत्यय प्राचुर्यार्थ आनंद होने से वह भी अन्नमय आदि चार भी आनंदमय ही है। इसीलिए यहाँ मयट से विकार अर्थ नहीं समझना है। अधि भगवो ब्रह्म, जो भृगुवल्ली में कहा है कि भृगु ने वरुण को पूछा, ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान संबंधी प्रश्न पूछा, तो अधिकारी नहीं होने के कारण ब्रह्म का स्वरूप नहीं बताया और तप करने का उपदेश किया। तप के द्वारा अधिकारिता प्राप्त होगी, ऐसा तप को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का साधन, और तप के अलावा ब्रह्म ज्ञान नहीं होता यह भी बताया। ब्रह्म का ध्यान करना, भगवान के स्वरूप को हृदयारूढ़ करना, ऐसा तप का स्वरूप भी बताया। तप से अन्नमयादि चार कोशों का, अर्थात यह जो चार कोश है हमारे भीतर क्या कार्य करते हैं उसका भी ज्ञान तप के द्वारा ही होता है। इसीलिए तप से जो ज्ञान ब्रह्म रूप से चार कोश का भी प्राप्त होता है, तो फिर अगर जो तप से ये ज्ञान ब्रह्म रूप से ही अगर हमको चार कोशों का ज्ञान प्राप्त होता हो, तो फिर कोई उसको जो विचारक है उसको प्राकृत नहीं कहने चाहिए। जो चार कोश है उसको प्राकृत नहीं कहना चाहिए, ये बात महाप्रभु जी कह रहे। अब पूर्व पक्षी शंका करे कि ब्रह्म विषयक प्रश्न साधन उपदेश के प्रसंग में ही ज्ञात होता है कि यह जिस साधन का उपदेश किया हो वो मतलब जिस साधन का उपदेश किया हो उसके अलावा यज्ञादि साधन या कोई दूसरे साधन से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तब से ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये बात बताई पूर्व पक्षी ने। उनका तात्पर्य यह है कि भक्ति से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, ऐसा कहने का उनका तात्पर्य है। तो कहते हैं कि भगवान अनंत विभूति रूप है, भगवान जिस रूप से जो कार्य करते हैं अन्य कार्य करने का उनका सामर्थ्य होते हुए भी उस रूप से अन्य कार्य नहीं करते, उनकी लीला का ऐसा ही नियम है। मतलब जीव का जैसा अधिकार होता है वैसा ही उसको ज्ञान प्राप्त होता है। अन्नमय का, विज्ञानमय का आदि जो भी जितना अधिकार होगा उतना ही उसको ज्ञान प्राप्त होगा। भगवान जिस जीव को जो साधन के द्वारा ब्रह्म ज्ञान करवाना चाहते हैं वैसे ही उसको उतना ही ज्ञान होगा। तप से करवाना चाहते हैं तो तप द्वारा उस तप को साधन बनाकर ज्ञान प्राप्त करवाएंगे। यज्ञ आदि को करना चाहते हैं तो वैसे करवाएंगे, तो उसमें भी ब्रह्म ही कारण रूप है। ये बात मेरी समझ में आई। यहाँ कहते हैं कि अब जो निरूपण आ रहा है कि अन्नमय, हाँ अभी पक्षी निरूपण आ रहे हैं। हाँ, और पक्षी रूप के अभी शंका कर रहे हैं कि पक्षी रूप से जिस ब्रह्म का निरूपण किया गया है वह परब्रह्म है कि नहीं, तो उसमें महाप्रभु जी निर्णय देते हैं कि वह भी परब्रह्म ही है। पूर्ण ब्रह्मांड को धारण करने वाला परब्रह्म के अतिरिक्त कोई और तत्व नहीं हो सकता, ये बात यहाँ बता रहे। और ये जो है वो मुख्य ब्रह्म ही है, गौण ब्रह्म और मुख्य ब्रह्म ऐसा भेद हम उसमें नहीं कर सकते। आदि भौतिक रूप में ही आध्यात्मिक पुरुष का प्रवेश है, वाजस्नेही शाखा में कहा। उससे कहते हैं कि द्विपद चतुष्पद होकर फिर शरीर को धारण करके पुरुष रूप से उसमें प्रविष्ट हुआ।
प्राकृत विविध देहों में वह अप्राकृत का प्रवेश वैसे तो अनुचित है, परंतु स्वयं प्रवेश के बिना कुछ भी कार्य नहीं होगा। इसीलिए गति प्रबंधन का उल्लंघन करके अलौकिक गति से प्रवेश करता हूँ। गति प्रबंधन का उल्लंघन मतलब कि भौतिक रीत से जो प्रवेश करते हैं ऐसा भौतिक नहीं है, लौकिक नहीं है, अलौकिक गति से प्रवेश करता हूँ, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। पूर्व पक्षी आनंद कह रहे हैं कि आनंदमय के विषय में इतना कहने पर भी वह परम काष्ठापन्न नहीं है, अतिशय धर्मयुक्त विभूति रूप ही है, जो आगे बताया। प्रियमेव शिरः मोदः दक्षिण पक्षः प्रमोद उत्तर पक्ष, ये जो आगे बताया ऐसे आनंद रूप है का ही ये वर्णन है, ऐसा कहा। इसलिए ये परमात्मा है ऐसा नहीं कह सकते। जो ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये ऐसे आनंद रूप जो आपने कहा, इसीलिए यह परमात्मा नहीं हो सकते, क्योंकि आनंद रूप जो आनंदमय है वो भी वो परमात्मा है ऐसा स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए कह रहे कि अन्नमयादि की तरह यह आनंदमय की भी अवयव रूपता ही स्वीकारनी चाहिए, ऐसे उसको शारीर आत्मा रूप नहीं कह सकते। पक्षी स्वरूप में भी शारीर आत्मा से भिन्न ही प्रतीति होती है। कोई कहे कि ब्रह्म जगत से अतिरिक्त वस्तु है, तो यह भी मानना पड़ेगा कि आनंदमय से अतिरिक्त अंतरात्मा ब्रह्म है। वह ऐसा नहीं है, उससे भी परे है, ऐसा भी नहीं कह सकते। उक्त प्रपाठक में ब्रह्म के आध्यात्मिक रूपों का ही वर्णन किया गया है और उसको अवयव अन्नमयादि 5 प्रकार के हैं, तो परतत्व तो इस स्वरूप से भिन्न ही है, ऐसे पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। तो सूत्रकार यहाँ आनंदमयोभ्यासात् जो सूत्र बताया उसे ही यहाँ कह रहे हैं कि जो आनंद बारंबार कहने से आनंद है, ये आनंद है, ये आनंद है, ऐसा कहने से ही उनकी परतत्व रूपता सिद्ध की। यहाँ आनंदमय ही परतत्व है, वही शारीर आत्मा है। अन्नमयादि में भी शास्त्र में सर्वत्र आनंदमय का ही आत्मा के रूप में निरूपण किया गया है, इसलिए वह आनंदमय ही है, ऐसा यहाँ सिद्ध किया। अब पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि हमें ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिलता कि जिसके आधार पर हम इस सूत्र का स्वीकार कर सके। सर्वांतर आत्मा के रूप में आनंदमय को स्वीकार किया जाए तो आनंदमय के भीतर भी कोई आत्मा होगा, तो तस्य एष एव ऐसा क्यों कहा? अयम एव पूर्वस्य आत्मा ऐसा कहना चाहिए। इसलिए आनंदमय को परतत्व नहीं समझ सकते। तो समाधान कर रहे हैं कि ईश्वर ही सर्वांतर्यामी रूप है, वह रस रूप है, उसे प्राप्त करके ही सारा जगत आनंदित होता है। यह जो आकाश है वह आनंद नहीं है, यह परमात्मा ही उसे आनंदित करता है। आदि वचन से यही समझना चाहिए कि आनंदमय शब्द तत्व का ही वाचक है। इसमें पूर्व पक्षी अब आगे कह रहे हैं कि आप तो कह रहे हो कि यहाँ जो निरूपण आ रहा है उसे परब्रह्म का आनंद नहीं गिनना चाहिए, आध्यात्मिक ही कहना चाहिए। तो उस शंका के निराकरण में कहते हैं कि जो आनंदमय कोश के ऊपर भी एक तत्व है, अन्न आदि को आदि भौतिक कहे, विज्ञानमय आनंदमय को आध्यात्मिक, और जो मुख्य ब्रह्म है उसे ही आदिदैविक कहना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी कहते हैं। तो अब समाधान महाप्रभु जी दे रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आध्यात्मिक कहे उसमें भी आदिदैविक का ही निरूपण किया गया है, अर्थात यह भी अखंड ब्रह्म का ही निरूपण है, ऐसा हमें समझना चाहिए। भृगु ऋषि ने अन्नमयादि का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी ब्रह्म जिज्ञासा की, परंतु आनंदमय का ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद जिज्ञासा नहीं की। इसीलिए यहाँ सिद्ध होता है कि आनंदमय ही ब्रह्म रूप है, आनंदमय का ही यहाँ निरूपण कर रहे हैं और वही मुख्य ब्रह्म का निरूपण है। ब्रह्म विदाप्नोति परम ऐसा जो उपक्रम किया था, इस श्रुति वचन से ज्ञेय आनंद तत्व है, उसका विचार करके ब्रह्म को जानने वाला पुरुष और आदित्य अर्थात सूर्य वैदिक देवता है,
उस दृष्टि से ब्रह्मतया सूर्य को बताया गया है। उत्पत्ति स्थिति लय सूर्य के द्वारा होता है, वो भी जो बताया गया है वो भी ब्रह्मतया ही सूर्य को वहां बताकर ब्रह्म ही सूर्य रूप भी ब्रह्म ही बने हैं, ऐसा ही तात्पर्य कहने का है। तो और ब्रह्मवेता जो पुरुष है और आदित्य में एक ही तत्व दोनों में रहता है और अक्षर ब्रह्म की प्रतिष्ठा बताई है। और एक ही तत्व जो ब्रह्मवेता पुरुष है और सूर्य दोनों में एक ही तत्व रहता है और आनंद की एकता भी यहाँ बताई है। तो जिस मतलब ब्रह्मवेता पुरुष में भी और आदित्य में भी ब्रह्म को प्राप्त करना, ऐसा स्वरूप वर्णन करके जो इस तत्व को जानता है वह ऐसे आनंद को प्राप्त करता है, ऐसा कहकर इस आनंद निरूपण का यहाँ उपसंहार कर रहे हैं। उपसंहार में भी उस पूरे प्रकरण में आनंद ही परतत्व है, परम ब्रह्म है। गौण ब्रह्म का यहाँ निरूपण नहीं समझना चाहिए, यही परतत्व का ही निरूपण यहाँ समझना चाहिए। पुरुषोत्तम का आनंद मन वाणी से अगम्य है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तो जो परब्रह्म है और जो परब्रह्म है वो मन और वाणी से अगोचर होता है। आनंदो ब्रह्मेति विद्वान न बिभेति कुतश्चन। तो यहाँ कहते हैं कि ये जो वचन है आनंदो ब्रह्मेति विद्वान, तो कहते हैं कि मन से नहीं जान सकते हैं, तो फिर उसको विद्वान क्यों कहा? तो जो मन वाणी से परे है वह परब्रह्म, या मन वाणी जिसे जान सकते हैं वह परब्रह्म, जिसे मन वाणी से जान सकते हैं वह परब्रह्म नहीं होता, तो निचले तत्वों को ही वह जानता है, ऐसा ही कहना चाहिए। सो अश्नुते सर्वान कामान, इस प्रकार से जो ब्रह्म का अनुभव करता है उसकी सारी कामना पूर्ण होती है। अस्मात् लोकात् प्रीत्य, इस वचन में लोक में अब उसे कोई भय नहीं रहता। अगर नाशवंत फल प्राप्त हो तो जैसे स्वर्गादि लोक की ऐसे मतलब स्वर्गादि लोक आदि जो फल प्राप्त होते हैं उसमें तो जीव को भय रहता है कि मेरा जो फल का जो समय है वो खत्म ना हो जाए, ऐसा भय रहता है। परंतु यह जो परम फल की प्राप्ति हो जाती है तब काल आदि का भय भी जीव को नहीं रहता है, क्योंकि यह अखंड फल है। इसीलिए श्रुति ने ब्रह्म का सामान्यतया निरूपण करके विशेष रूप से परब्रह्म का अखंड फल मिलता है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन, वह आनंदमय का जो जीव अनुभव करता है वह लोक वेद काल आदि के भय से निवृत्त होकर भगवान के भजन उपयोगी भगवत विभूतियों के संगात को प्राप्त करता है। देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण सहित जो संगात है उसमें भगवान का आवेश होने पर वह अलौकिक बनते जाते हैं। देह इंद्रिय आदि जो भी है वो सब अलौकिक बनते जाते हैं, इसीलिए इसका ब्रह्म के साथ भोग भी बताया। इसलिए जो अन्नमय है, देह रूप है प्राकृत शरीर, वह प्राकृत शरीर नहीं रहता, विभूति रूप बन जाता है, जिसे अलौकिक सामर्थ्य हम कहते हैं। प्राण मनोमय से अंतःकरण रूप, जहाँ से सभी इंद्रियों का संचालन का कार्य होता है। विज्ञानमय, वो परम व्योम का प्राकट्य हृदय गुहा में होता है। ऐसा जीवात्मा इस तरह से अन्नमय आदि की हमको मतलब ऐसा जीवात्मा सब विज्ञानमय आदि होकर अलौकिक सामर्थ्य रूप उसकी इंद्रिया अंतःकरण आदि हो जाते हैं। इस तरह से अन्नमय आदि की विभूति रूपता बताई। परब्रह्म का आविर्भाव जीवात्मा में होता है, तब वह जीव अपने हृदय में विराजे परमात्मा के साथ अखंडित कामनाओं की अनुभूति करके भगवद रूप हो जाते हैं। जैसे आस्करण राजा, उनका अनुभव भी अब यतो वाचो निवर्तन्ते, ऐसे मन वाणी से अगोचर उनका अनुभव भी ऐसा हो गया कि मन वाणी से वो अगोचर होता है, ऐसी उत्तम अवस्था को प्राप्त हुए। यहाँ से महाप्रभु जी ने अन्नमय आदि की विभूति रूपता और आनंदमय ही परमात्मा है, यह बात सिद्ध की। इतना जय मेरा निरूपण है। आगे हंसा करने वाली है। दंडवत प्रणाम। राजा को मेरा दंडवत प्रणाम। जय जी को मेरा दंडवत। हाँ जय दंडवत प्रणाम। હું ગુજરાતીમાં નિરૂપણ કરીશ અને આગળ હિનાબેને જે નિરૂપણ કર્યું એમાં થોડુંક
મેં પણ તૈયારી કરી છે કે વેદાંત અધિકરણ માલાની, એવું થોડુંક આગળ વિષય લઈ અને પછી હું વિષયની શરૂઆત કરીશ. વેદાંત અધિકરણ માલામાં શ્રી પુરુષોત્તમજી આજ્ઞા કરે છે કે આગળના અધિકરણથી જે સાબિત કર્યું કે બ્રહ્મમાં સત પણ હોય છે અને ચિત્ત પણ હોય છે, તો ન અવ્યાપ્તિ રહી અને ન અતિવ્યાપ્તિ રહી. અસંભવ દોષની જરૂરત જ નથી, કેમ કે બ્રહ્મ સિવાય બીજું કાંઈ છે જ નહીં. તો આ વાત જે એ બીજું કાંઈ છે જ નહીં, તો વાત ક્યાં છે? તો વચનથી કહી રહ્યા છે કે બ્રહ્મ એકમેવ અદ્વિતીય છે, એ વાત સિદ્ધ છે. હવે સતને ચૈતન્યના રોલને લઈને પ્રોબ્લેમ હતો, કેમ કે તેથી તો ત્યાં સગુણ બ્રહ્મ નિર્ગુણ બ્રહ્મનું પહેલું આવી રહ્યો છે. આનંદમાં એની જરૂરત નથી, આનંદમાં એ વાત આવશે જ. આનંદ બ્રહ્મનો જ પહેલું છે, બીજામાં એ પ્રકારથી આનંદ નથી હોતો. તે વાત આ અધિકરણ અંતર્યામીના રોલથી બતાવશે કે અંતર્યામી આનંદવાન હોય છે. આગળ જીવાત્માને બ્રહ્માત્માને સમાન કરવા વાળી વાત છે. શંકરાચાર્યજી માટે જીવ અને બ્રહ્મ એ બંને એક છે. તો શ્રી મહાપ્રભુજી એ લેવલ ઉપર આનંદને સમજાવશે કે જીવ અને બ્રહ્મ એક નથી હોતા. એ શ્રી પુરુષોત્તમજી અધિકરણ વેદાંત અધિકરણ માલામાં સમજાવ્યું છે. હવે થોડુંક આગળના અધિકરણનું સંદર્ભ લઈશું. પહેલા અધિકરણમાં બ્રહ્મની જિજ્ઞાસાનું વર્ણન કર્યું, બીજા અને ત્રીજા અધિકરણથી સદંશનો અને ચોથા અધિકરણમાં ચૈતન્યના પહેલુંને સ્પષ્ટ કર્યા. પછી પાંચમા અધિકરણ છે તે આનંદ ગુણધર્મને લઈને આવી રહ્યું છે, જે બ્રહ્મ સત ચિત્ત આનંદવાન આ ત્રણેયને સાથે સમજાવી શકાય. આ પાંચમો અધિકરણ આનંદમય અંતર્ગત આ 8 સૂત્રથી આવી રહ્યો છે. એમાં બ્રહ્મની પરમાનંદ રૂપ કારણતા બતાવી છે. બ્રહ્મ જે છે તે આનંદ ગુણધર્મવાન હોવાથી કારણ થાય છે. તો જેટલા પણ શાસ્ત્રમાં આનંદ ગુણધર્મ બતાવવા વાળા વાક્ય છે તે કેવલ બ્રહ્મ પરક જ છે. એટલે કે બ્રહ્મના સિવાય કાંઈ બીજામાં આનંદ ગુણધર્મ હોઈ નથી શકતો. એ પ્રકારથી એની વ્યાખ્યા અહીંયા કરાશે. આ વાક્ય બ્રહ્મ ભૃગુ પ્રપાઠમાં બ્રહ્માવલીમાં છે કે બ્રહ્માવલીમાં આનંદના સ્વરૂપને સમજાવવા માટે, આનંદની માત્રાની ગણતરી કરવા માટે, આનંદ ગુણધર્મની ક્ષમતા સ્પષ્ટ કરવા માટે આ પૂરું પાંચમું અધિકરણ આવી રહ્યું છે. હવે આગળની સંગતિ થોડીક લઈએ તો આગળ આપણે જોયું કે જીવ પુરુષોત્તમની સાથે બધી કામનાઓનો ભોગ કરે છે અને તે જ મન અને વાણીનો વિષય ન થાય એવા આનંદનો અનુભવ કહેવાય છે. તે જીવ અનુભવમાં જ જણાય એવા આનંદને પ્રાપ્ત કરે છે. એમ ઉપક્રમ અને ઉપસંહારના વાક્યોની એક વાક્યતાથી સમજાવે છે. એ આપણે જોયું. હવે આગળ આપણે પૂર્વ પક્ષ આવી રહ્યો છે તે એની હવે એ મારો વિષય છે એની હું શરૂઆત કરી રહી છું. પૂર્વ પક્ષ શ્રી મહાપ્રભુજી લાવી રહ્યા છે કે કોઈ એવો વિચાર કરે કે પુરુષ ચક્રે દ્વિપદ, એ શ્રુતિમાં વસ્તુતઃ પુરુષનું જ વર્ણન છે. અર્થાત કે પ્રકૃતિ પુરુષ સંબંધી જે વર્ણન છે તે પુરુષ છે, તેનું વર્ણન અહીંયા કર્યું છે. એનું વર્ણન એ રીતે છે, પૂર સંબંધી હોવાથી તે પક્ષી થઈ ઘોંસલામાં પ્રવેશ કરે છે. અન્નમય વગેરેનું વર્ણન છે, એટલે કે અર્થાત અન્નમય, પ્રાણમય, મનોમય એના પૂર છે, જેની અંદર તે પક્ષી રૂપે પ્રવિષ્ટ થાય છે. અર્થાત કે એક શરીરની અંદર આટલા બધાનો પ્રવિષ્ટ કેવી રીતે થશે, કોની અંદર પ્રવેશ થયો, તો એનો વિચાર કરતા એવું સમજવું જોઈએ કે અહીંયા પ્રાકૃતત્વ અને બ્રહ્મત્વમાં
કોઈ એકની વિશેષતા બતાવવાનો સંકેત મળતો નથી. મતલબ કે પ્રકૃતિમાં બ્રહ્મનો પ્રવેશ થાય છે કે બ્રહ્મમાં પ્રકૃતિનો પ્રવેશ થાય છે, એ નક્કી નથી કરી શકતા કે કોણ કોની અંદર પ્રવેશ કરે છે. તેથી બધાનો પ્રવેશ અપ્રવેશ બંને થઈ શકે છે. બ્રહ્મનો જ પ્રકૃતિમાં પ્રવેશ થાય છે એવું કહેવું જરૂરી નથી, એવું પૂર્વ પક્ષ કહી રહ્યા છે. હવે સિદ્ધાંત પક્ષ શ્રી મહાપ્રભુજી એની પ્રક્રિયા સમજાવે છે કે અસ્માત લોકાત પ્રેત્ય, એટલે કે જીવ જે છે તે આ લોકને છોડી ભગવત લોકમાં અર્થાત બ્રહ્મલોકમાં જાય છે. આ વાક્યમાં ઇદમ શબ્દનો જે પ્રયોગ કર્યો છે ત્યાંથી આ પ્રાકૃત જગતનું અતિક્રમણ કરીને સાક્ષાત ભગવાનની લીલાના ઉપયોગી ગુણાતીત જે પ્રપંચ છે એને જીવ પ્રાપ્ત કરે છે એવું કહેવાયું છે. જે સંન્યાસ નિર્ણયમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ ગોલકનું એક્ઝામ્પલ આપીને આપ્યું છે કે વિરહાનુભવ જીવના હૃદયની અંદર પહેલા ભગવાનનું પ્રાકટ્ય થાય છે અને પછી ભગવાન અંતર્ધ્યાન થઈ જાય છે, અને ત્યાર પછી જયારે વિરહાનુભૂતિ પ્રબળ થાય છે પછી ભગવાન બહાર પ્રકટ થાય છે અને દર્શન આપે છે. તે જ ભગવાન પાછા અંદર પ્રવિષ્ટ થઈ જાય છે. આ રીતે આંતરબાહ્ય પ્રાકટ્યની પ્રક્રિયા ચાલતી રહે છે અને છેલ્લે આંતરમનમાં પ્રકટ થઈને પૂરા સંઘાતની અંદર ભગવાન અનુસ્યુત થઈ જાય છે અને ત્યારે જીવ અને ભગવાન બંને એક થઈ જાય છે. તેને શ્રી મહાપ્રભુજી સમજાવવા ઈચ્છે. જે પૂર્વ પક્ષમાં કહ્યું હતું કે પહેલા કોણ આવ્યું, તો અહીંયા શ્રી મહાપ્રભુજી સમજાવી રહ્યા છે કે સંન્યાસ નિર્ણયમાં આજ્ઞા કર્યા મુજબ શ્રી મહાપ્રભુજી સમજાવવા ઈચ્છે છે કે પહેલા ભગવાન જીવમાં પ્રવિષ્ટ થાય છે, ત્યારે જીવનું ભગવાન સાથે એકત્વ થાય છે. તેથી ભગવત ભાવ સંપન્ન થવા પર જ્યારે ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય એના પહેલા અન્નમય વગેરે રૂપવાળા બ્રહ્મનું, અર્થાત કે બ્રહ્મ પણ અન્ન રૂપ હોય છે. પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય કોષો હોય છે. તો એ જે બ્રહ્મ છે એ વસ્તુમાં પ્રવિષ્ટ ન થતા હોત, અર્થાત કે ભગવાનનો આવેશ આપણા દેહ, ઇન્દ્રિય, મન, પ્રાણમાં ન થતો હોય તો બધી વાસનાઓને ભસ્મ કરવા વાળી ભગવદ વિરહનો ભાવ જે છે એના કારણે એ શરીર પણ નષ્ટ થઈ જશે. તો શ્રી મહાપ્રભુજી સંન્યાસ નિર્ણયમાં એ વાત કરી છે કે ભગવાનના ગુણગાનના કારણે એ જીવ જીવિત રહે છે. તો જીવિત રહેવાનું તાત્પર્ય ગુણગાન દ્વારા પણ એના દેહ, ઇન્દ્રિય, અંતકરણમાં ભગવાનનો આવેશ બન્યો રહે છે. તો જે વાત અહીંયા શંકરાચાર્યજી જીવના નાશને મુક્તિ કહે છે એ પ્રકારે અક્ષર બ્રહ્મમાં લય થાય છે જીવનો. એ રીતે જીવ જો લીન થઈ જાય છે તો એમાં કોઈ પ્રકારની લીલા રસની અનુભૂતિ હોતી નથી. અને જો એમ કહીએ કે ભગવાને પ્રવિષ્ટ થવાની જરૂર જ નથી, કેમ કે અન્નમય વગેરે રૂપથી બ્રહ્મ એ વસ્તુમાં સ્થિત છે, તો એ વસ્તુનો નાશ સંભવ નથી. પરંતુ એવું નથી કહી શકતા, કેમ કે એનું નાશ તો થાય જ છે. તો ભગવાનનો તાદાત્મ્ય સંબંધ હોવાના કારણે એની સ્થિતિ પણ થાય છે અને એનો નાશ પણ થાય છે. તો સૌથી પહેલા પ્રોસિજર એ છે કે જીવની અંદર ભગવાનનો પ્રવેશ પહેલા થાય છે અને એના દ્વારા દેહાદી સંગાતના જેટલા પણ પહેલું છે તે બધા આનંદાત્મક, રસાત્મક હોય છે. અને જ્યારે પોતાની ઇન્દ્રિય, દેહ, મન, પ્રાણ, અંતકરણ વગેરેમાં ભગવાનનો અનુભવ થવા લાગે છે ને ત્યારે બધી કામનાઓથી પરિપૂર્ણ થઈને નિશ્ચિંત થઈ જાય છે. એ જ વાત શ્રુતિ વાક્યથી કે ન વિભેતિ કુતશ્ચ, એટલે
અર્થાત કે આનંદને જાણવા વાળા વિદ્વાન કોઈથી ડરતા નથી એવું શ્રુતિ વચન કહીને એતઃ વાવ ન તપતી, એટલે કે કોઈથી દુખી અને કોઈથી તાપ એને થતો નથી. તાત્વિક જ્ઞાન થઈ જવાથી ભયના અભાવની વાત સિદ્ધ થાય છે. વાજસેયની શાખામાં અંતર્યામી બ્રાહ્મણમાં શરીર, પ્રાણ, અંદરનું મન, ઇન્દ્રિયો અને જીવાત્મા એ બધા બ્રહ્મનું શરીર છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે. અહીં પૂર્વોક્ત નિર્ગુણ દેહો ભગવાનના ચરણની રજમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા હોવાથી વિભૂતિ રૂપ છે અને તેથી બ્રહ્મનું શરીર છે તેમાં, એટલે કે શરીરમાં અન્નમય બ્રહ્મના પ્રવેશથી અન્નમયની સ્થિતિ છે અને પ્રાણોમાં પણ તે જ પ્રકારે છે. જ્ઞાન ઇન્દ્રિયોમાં જ્ઞાનમયના પ્રવેશથી તેમજ થાય છે. મનમાં મનોમયના પ્રવેશથી તે પ્રકારે થાય છે, પણ જીવમાં તો આનંદમય પ્રવેશ કરે છે તેમ, એટલે કે લીલાનો અનુભવ કરવાની યોગ્યતા છે. તેથી પ્રવેશ કરવાથી આનંદમયનું પક્ષી તરીકેનું કથન બરોબર છે. પછી આગળ શ્રી મહાપ્રભુજી અહીં આજ્ઞા કરે છે કે આનંદમયની વ્યાખ્યા નથી કરી શકતા. શ્રુતિ પણ આનંદની ગણના કરતા પછી નેતિ કહીને એ પક્ષને છોડી દે છે. તો જે આત્મા છે એને પક્ષીની ઉપમા આપી છે. હવે પક્ષીની ઉપમાથી સમજાવી રહ્યા છે કે જે આત્મા છે તે પક્ષીની ઉપમા આપી છે. પક્ષી જે પ્રકારથી પોતાના ઘોંસલામાં પ્રવેશ કરે છે એમ આત્માનો પ્રવેશ થાય છે. એ પ્રક્રિયાને 5 પ્રકારથી સમજાવ્યું છે. એ જ પ્રક્રિયાને અનુરૂપ છે તે આનંદમયની વ્યાખ્યા કરી છે. અહીં એક્ઝામ્પલથી સમજાવે છે કે આગળ વાત જે કરી તે એ કે જેમ આનંદમયનો જ્યારે અનુભવ થાય છે કે ભગવાન જ્યારે આપણી અંદર પ્રવિષ્ટ થાય છે તો નિરોધ લક્ષણના વિવેચનમાં શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે જેમ જેમ ભગવાનનો આવેશ અંદર થતો જાય છે એમ આપણી ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, અંતઃકરણ વગેરે શુદ્ધ થતી જાય છે. એમાં અપ્રાકૃતતા અને અલૌકિકતા નું આવેશ થવા લાગે છે. એને અહીં ઉદાહરણથી સમજાવે છે કે જેમ પારસમણીના સ્પર્શથી ચાંદી હોય તે સુવર્ણ બની જાય છે, એ જ પ્રકારે પરતત્વ આપણી અંદર પ્રવેશ કરે છે ત્યારે એ પરતત્વને ધારણ કરવા વાળા દેહાદી સંગત હોય છે તે પણ તદાત્મક થઈ જાય છે. જે પ્રક્રિયા શ્રી મહાપ્રભુજી સિદ્ધાંત રહસ્યમાં ગંગાજીના ઉદાહરણથી બતાવે છે કે જેમ ગંગાજીના સંબંધથી સામાન્ય જલ પણ ગંગારૂપ થઈ જાય છે ત્યાં તે જ અહીં પરબ્રહ્મના આનંદમયના વિષયથી સમજાવે છે કે શ્રુતિ વચન છે કે બ્રહ્મવિત આપનોતી પરમ માં બ્રહ્મને જાણવા વાળો પરમ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરે છે. બ્રહ્મને જે જાણે છે એ વાત સામાન્ય રૂપથી કહી છે કે તે પરમને પ્રાપ્ત કરે છે. એ પછી બીજી શ્રુતિ વચનથી સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ, આ વાક્યથી તાત્પર્ય બતાવે છે કે જે બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરવાનું કહ્યું છે તે બ્રહ્મના લક્ષણ રૂપે સત્યરૂપતા, આનંદરૂપતા અને અનંત રૂપતા બ્રહ્મની બતાવે છે. અને જ્યારે તે પરમ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરે છે તે બ્રાહ્મિક આનંદનો અનુભવ જીવ કરે છે. તો તે અવસ્થા કેવી હોય છે તેને સમજાવે છે કે એ પ્રકારની અવસ્થામાં જીવાત્માને ભગવાનના જેવા અનુભવ થાય છે તો પણ બ્રહ્માનંદનો અનુભવ અને બ્રાહ્મિક આનંદનો અનુભવ તે અવસ્થામાં કરે છે. તો સોસ્નુંતે સર્વાન કામાન, એ
એ વચનથી પણ શ્રુતિ કહે છે કે ત્યાં બધી કામનાઓના અર્થ છે. બ્રાહ્મિક ઉપાધિથી તે બધી કામનાઓનો ભોગ કરે છે. જીવત્વથી નથી કરી શકતો, કેમ કે તે અવસ્થામાં બ્રહ્મના આવેશથી યુક્ત હોય છે, અથવા બ્રહ્મની અંદર અંતર્નિષ્ઠ હોય છે. બ્રહ્મવિદ અર્થાત ફક્ત બ્રહ્મને શાબ્દિક રૂપથી ખાલી જાણવા વાળો નહીં, પરંતુ જે બ્રહ્મનો અનુભવ કરે છે, કે બ્રહ્મને બધા પહેલુંથી જાણે છે. જે વાત સીમા પ્રભુજી સંન્યાસ નિર્ણયમાં સમજાવે છે કે જ્યારે જીવ વિરહ અવસ્થાનો અનુભવ કરે છે, એ અવસ્થા જ્ઞાન માર્ગીય અને ભક્તિ માર્ગી બંને માટે આવે છે. તો જ્ઞાન માર્ગીય બ્રાહ્મિક અનુભવ કે જ્ઞાન માર્ગીય બ્રાહ્મિક અનુભવ કે અનંતતાનો અનુભવ કરવા પ્રતીક્ષારત હોય છે, અને બીજી બાજુ ભક્ત પણ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે ઈચ્છુક હોય છે. તો જે અંતિમ અવસ્થા છે, જેમાં ચરમ અવસ્થા પર એની અનુભૂતિ પહોંચી જાય છે, તે અંતિમ પગથિયા પર હોય છે. તો એ અનુભૂતિ અન્ન પ્રાણ વગેરે રૂપે પરમાત્માની દરેક પ્રકારની સ્ફૂર્તિ કરે છે. હવે આગળ ચરમ અવસ્થાને સમજાવે છે. આગળથી સ્ફૂર્તિ કરે છે, એને દરેક પહેલુંથી પ્રાપ્ત કરવા ચાહે છે, અર્થાત કે પોતાના શરીરથી પણ ચાહે છે, ઇન્દ્રિયને સંતુષ્ટ કરવા ચાહે છે, અંતકરણથી બ્રાહ્મિક અનુભવની ઈચ્છા રાખે છે. તો ભક્તની અલગ પ્રકારની ઈચ્છા હોય છે અને જ્ઞાન માર્ગીયની અલગ પ્રકારની ઈચ્છા હોય છે, પરંતુ બંનેની અવસ્થામાં ઈચ્છા તે પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવા માટે કરે છે. તેથી અન્નમય વગેરે રૂપનું જે વર્ણન કરાયું છે, કે જેનો અનુભવ જીવ એ અવસ્થામાં કરે છે, એનાથી જીવ પોતાના આત્માને પ્રેમ કરે છે અને પરમાત્મા રૂપ ભગવાનને પણ પ્રેમ કરે છે. એ અવસ્થા એની ચરમ અવસ્થા હોય છે. અને ભગવદ આવિર્ભાવ જ્યારે થઈ જાય છે, ત્યારે પણ વિરહની અનુભૂતિ કે પોતાના પૂર્વ અવસ્થાની અનુભૂતિ એટલી તીવ્ર હોય છે કે જ્ઞાન વગેરે બધું એ અવસ્થામાં તિરોહિત થઈ જાય છે, અને એના કારણે જીવને રસાનુભૂતિ થઈ શકતી નથી. તે સ્વયં જ પરમાત્મા જ તદનુભાવાત્મક બની જાય છે. એ જ પરમાત્માની વિજ્ઞાનમયતાનું રહસ્ય છે. હવે આગળ કહે છે કે એ જે અનુભવ છે તે જ્યારે પ્રત્યક્ષ થઈ જાય છે, જ્યારે એને ખબર પડી જાય છે, તો એને આનંદમય કહે છે. એવા આનંદમય સ્વરૂપનું વર્ણન અહીંયા કરાયું છે. તો શ્રુતિથી બ્રહ્મવિત આપનોતિ પરમ, પછી બીજું વચન છે કે નવવિભેદિત કૃતશ્ચ, અને ત્રીજું વચન છે કે સોસ્મુતે સર્વાન કામાન. આ શ્રુતિ વચનોમાં એ આનંદમયની જે અનુભૂતિનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, તેમાં એટલે કે આનંદમય પ્રાકટ્યમાં નિરુપાધિક પ્રીતિ જ મુખ્ય છે, અન્ય નહીં. આગળ સમજાવે છે કે એમ જણાવવાને પ્રિય સ્વરૂપને ભક્તની પ્રીતિના વિષયમાં ભગવાનના આનંદમય સ્વરૂપને શ્રેષ્ઠ કહેવામાં આવે છે. આનંદ પ્રકટ થયા તે વખતે પ્રિયના દર્શન વગેરેથી જે આનંદાત્મક જ વિવિધ રસભાવનો સાગર ઉત્પન્ન થાય છે, તેને દક્ષિણ પક્ષ કહેવામાં આવે છે. અને પછી સ્પર્શ વગેરેથી પૂર્વથી વિલક્ષણ ઉત્તમ કોટીના આનંદનો જે સાગર છે, તેને ઉત્તર પક્ષ કહેવામાં આવે છે. એનાથી એ વાત સમજાવે છે કે એક પંખ, પક્ષીના ઉદાહરણથી સમજાવે છે કે એક પંખ હોય છે, પરંતુ એની અંદર પીછા ખૂબ હોય છે, જેનો સહારો લઈ પક્ષી ઉડે છે. તો એમ તો બે પંખ છે, મોદ અને પ્રમોદ છે, પરંતુ એના અવાંતર ભેદ હોય છે. તો તે બધા વિવિધ ભાવરૂપ છે, જેનાથી મોદ અને પ્રમોદના રસભાવનો અનુભવ થાય છે. અર્થાત
એટલી તીવ્રતા હોય છે, ભગવાનના આનંદનો અનુભવ જીવને આ સ્થિતિમાં આ પ્રકારથી થાય છે, તો ભલે વિભાવ હોય કે ભલે અનુભાવ હોય કે સ્થાયી ભાવ હોય, તે ભાવોનું અનુમોદન કરવા લાયક ભાવ હોય તો રસશાસ્ત્રમાં ભાવોને અલગ અલગ પહેલુંથી સમજાવ્યું છે. તો સ્થાયી ભાવ એક હોય છે જે એક પ્રકારનો અનુભવ જીવની અંદર થાય છે. આપણે રસશાસ્ત્ર આપણે મૈત્રી રાજાએ આપણને કરાયું તો એમાં આપણે જાણ્યું હતું અલગ અલગ ભાવ રસશાસ્ત્રમાં તે અહીંયા વર્ણન કર્યું છે. હવે આગળ કે એનાથી અતિરિક્ત એના સહાયક ભાવ એનાથી વધુ હોય છે, જેના દ્વારા સ્થાયી ભાવ પોષિત થાય છે. એની પ્રક્રિયા બતાવે છે કે કેમ કે એક સ્થાયી ભાવ છે, બીજા એના અવાંતર ભાવ છે. તો સ્થાયી ભાવને સમજાવે છે કે જ્યારે પરમની પ્રાપ્તિ કરવાનો જીવ પ્રયાસ કરે છે કે તે બ્રહ્મનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી રહ્યો છે, બ્રહ્મના સંબંધી શ્રવણ મનન નિધિધ્યાસન કરી રહ્યો છે, તો એ પરિસ્થિતિમાં પણ બ્રહ્મના આંશિક આનંદની અનુભૂતિ થાય છે. જેમ આપણે અનુભૂતિ અલૌકિક સામર્થ્યને પ્રાપ્ત કરવા પર કે સર્વાનુભાવ પ્રાપ્ત કરવા પર થશે, તો તે એનું અંતિમ ચરણ છે. હવે આગળ એ અંતિમ ચરણ સમજાવ્યું. હવે આગળ સમજાવી રહ્યા છે કે આનંદની અનુભૂતિ બ્રહ્મ જ્ઞાન દશામાં સાધન અવસ્થામાં રહેલા જ્ઞાનીને પણ ક્ષણિક આનંદની અનુભૂતિ થાય છે. જેમ આપણે અલૌકિક સામર્થ્ય કે સર્વાત્મ ભાવની અનુભૂતિ થવા લાગે તો આ સમયે સેવામાં આંશિક આનંદની અનુભૂતિ કરીએ છીએ. તે રીતે પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિની અવસ્થા છે, પરંતુ જે બ્રહ્મજ્ઞાની છે તેને પણ અંતિમ અવસ્થામાં જે પ્રકારની આનંદની અનુભૂતિ થાય છે તે ભજનાનંદની સામે ઓછી જ હોય છે. જે વાત શ્રી મહાપ્રભુજી સિદ્ધાંત મુક્તાવલીમાં સમજાવે છે કે ભક્તિ માર્ગ છે તે જ્ઞાન માર્ગથી ઉત્તમ છે. ત્યાં અક્ષર બ્રહ્મનો આનંદ પરબ્રહ્મના આનંદની સાથે તુલના કરી છે. એને જ અહીંયા સમજાવે છે કે જે જ્ઞાન માર્ગીયને અંતિમ અવસ્થામાં જે પ્રાપ્ત થવા વાળો આનંદ છે તે પણ ભજનાનંદના આનંદથી ઓછી માત્રામાં હોય છે. તે હીન જ સિદ્ધ થાય છે. ત્યાં શ્રુતિ પણ એ વાતને કહે છે કે બ્રહ્મ પુચ્છ, તો એ જે આનંદ છે તે પૂછ જેવો છે, અને ન્યૂન બતાવવા માટે ત્યાં એને પૂછના રૂપે બતાવ્યો છે. અક્ષર બ્રહ્મ છે એનો આનંદ ધર્મરૂપ આનંદ છે, ઓછો છે, પરંતુ તેમ છતાં પુરુષોત્તમની પ્રતિષ્ઠા અક્ષર બ્રહ્મમાં થાય છે. તેથી પુરુષોત્તમની પ્રતિષ્ઠા અધિષ્ઠાનના રૂપમાં અક્ષર બ્રહ્મને બતાવ્યો છે. તો એની અહીંયા તુલના કરે છે કે પરબ્રહ્મનો આનંદ જે છે જેને અહીં પરમ કહેવાયો છે તે અક્ષરથી ઉત્તમ જ છે. તેમ છતાં તે અપ્રધાન છે, કેમ કે ભક્તની જે કામના છે તે અક્ષર બ્રહ્મ પ્રાપ્ત કરવાથી પૂરી થતી નથી, પરંતુ ભક્તને આ પ્રકારની કામના હોય કે અક્ષરનો આનંદ પ્રાપ્ત થઈ જાય તો ભક્તિ માર્ગની ભાવનાથી વિપરીત ભાવના કહેવાય છે. કેમ કે એની આકાંક્ષા જીવને હોવી જ ન જોઈએ. તો એનું પ્રમાણ આપે છે કે શ્રુતિમાં અસન્નૈવ ભવતિ, ત્યાં એ જ વાત બતાવે છે કે જે એનાથી શ્રેષ્ઠની કામના રાખે છે એના માટે આટલો ઓછો જે આનંદ અક્ષર આનંદ છે તે ઉત્તમ નથી, એનાથી સંતુષ્ટ જીવ થતો નથી. જ્ઞાનાનંદ રૂપ સ્વાનુભૂતિના અભાવમાં ગુરુનો ઉપદેશ અને એમની કૃપાથી જ બ્રહ્મના અસ્તિત્વનું જ્ઞાન થાય છે. અર્થાત ભક્તો બ્રહ્મના જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરે કે બ્રાહ્મિક જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરે, આનંદની અનુભૂતિ કરે તો ભક્તને એ પ્રકારના કોઈ આનંદની અનુભૂતિ થતી નથી.
પરંતુ ગુરુના ઉપદેશ અને એમની કૃપા વગેરેથી એ બ્રાહ્મિક આનંદનો અનુભવ નથી. કેમ કે ભક્તે અક્ષર આનંદને પ્રાપ્ત કરવા માટે કાર્યરત નથી, પરંતુ બ્રહ્મના અધિષ્ઠાન હોવાના કારણે ભક્ત અક્ષર જ્ઞાનને તો પ્રાપ્ત કરે જ છે કે અક્ષરના જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવાની પ્રક્રિયામાં તો એ જોડાઈએ છીએ. તો એ પ્રક્રિયા ગુરુના ઉપદેશ અને એમની કૃપાથી થાય છે. શ્રી મહાપ્રભુજીના ગ્રંથોને ભણીને આપ શ્રીની કૃપાથી આપણને જે જ્ઞાન થાય છે તે બ્રહ્મના અસ્તિત્વનું, બ્રહ્મના સ્વરૂપનું, બ્રહ્મના ધર્મોનું થાય છે, પરંતુ બ્રહ્મના આનંદની અનુભૂતિ થતી નથી. તાત્વિક રૂપથી એના અસ્તિત્વનું જ્ઞાન થાય છે. તત્વ રૂપમાં જે છે એને બ્રહ્મ કહીએ છીએ. એના હોવા માત્રથી તે વાત દ્રઢ નથી થતી, પરંતુ અનુભવથી દ્રઢ થાય છે. તેથી જ્યાં સુધી ભક્તિ માર્ગની વાત છે ત્યારે જીવનો પુરુષોત્તમના આનંદનો અનુભવ થાય છે. ત્યારે પરમાત્માના સ્વરૂપને શબ્દો દ્વારા જાણ્યું તે અધૂરું જ્ઞાન કહેવાય છે. એ જ્ઞાનથી પૂર્ણતાનો અનુભવ વિહીન હોવાનું નથી કહેવાતું. આપણને પણ બ્રાહ્મિક આનંદની અનુભૂતિ નથી, પરંતુ ગુરુના ઉપદેશ અને કૃપા વગેરેથી બ્રહ્મના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થઈ જાય છે. એ ભક્તની આસ્તિકતા છે, અર્થાત કે બ્રહ્મના અસ્તિત્વ પર ભક્તની નિષ્ઠા છે, એનો વિશ્વાસ છે, તે જ પૂર્ણ આસ્તિક છે. આગળ કહી રહ્યા છે કે કેવલ જ્ઞાન અભિમાનીને ન તો અસ્તિત્વનું જ્ઞાન હોય છે કે ન સ્વરૂપનું જ્ઞાન હોય છે. તેને તો બ્રહ્મની સત્તા ઉપર પણ સંદેહ હોય છે અને બ્રહ્મની સ્વતંત્ર સત્તાનો તે વિચાર કરતો નથી. જે ખરેખર જ્ઞાની છે, અર્થાત કે ભક્ત જ છે, શુદ્ધ જ્ઞાની નહીં, પણ ભક્ત જ કેવલ ભગવાનના આ પ્રકારના સ્વરૂપનું જ્ઞાન પણ થાય છે, જેને પૂર્ણ જ્ઞાન કહીશું, અને એટલો પૂરેપૂરો અનુભવ એ જીવને થાય છે. ચતુર્વિચારક ભક્તો વ્રજના અધિપતિ શ્યામ સુંદરમાં જ આનંદમયના આનંદના સમૂહની અવધારણા કરે છે. જે પૂર્વ પક્ષ વાત કરી હતી કે જીવ ભગવાનમાં પ્રવેશ કર્યો કે ભગવાન જીવમાં પ્રવેશ કર્યો, તો અહીંયા ઉત્તર પક્ષથી એ સમજાવ્યું કે ભગવાન જીવમાં પ્રવેશ કરે છે, તેથી આનંદ પ્રકટ થાય છે. જ્ઞાન માર્ગી અને ભક્તિ માર્ગીના આનંદનો ભેદ કેવી રીતે છે તે અહીં બતાવ્યો. અસ્તુ, જે અહીંયા મારું નિરૂપણ સંપન્ન થયું અને મારી બુદ્ધિ પ્રમાણે મેં પહેલી વાર અણુભાષ્યમાં પાઠ લીધો તો તે પ્રમાણે સમજી છું તે કર્યું. કાંઈ ભૂલ હોય તો આપ સુધારવા વિનંતી. નહીં, સારી મહેનત કરી બધાએ. આગળનો વિષય હવે આપણે કાલે લઈશું. અહીંયા વિરામ.